परिवार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़ने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं हम लोगों के बीच में श्री अनिल एंटनी जी हैं। कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डिजिटल और कम्युनिकेशन सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। केरल का सोशल और डिजिटल मीडिया के हेड रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी जी के सुपुत्र हैं। और इस अवसर पर हम लोगों के मध्य श्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे केंद्र सरकार में मंत्री श्री मुरलीधरन जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे केरल के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्र जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि अनिल एंटनी जी का पार्टी में स्वागत करें और पार्टी सदस्यता की पर्ची और बुके का स्वागत करें। सबसे पहले मैं माननीय मुरलीधरन जी से भी आग्रह करूंगा कि अनिल एंटनी जी का पार्टी में स्वागत करें और मीडिया के साथियों को संबोधित भी करें। I would like to begin in Malayalam. പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിന്ന്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപന ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ 6. 1980 പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് 43 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ, ആ നിലപാടുകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് BBC ഇന്റർവ്യൂ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ സമയത്തുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വരാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം അനിൽ ആന്റണി ഒരു മതവിശ്വാസി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് സാധാരണ പൊതുവെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രചരണം ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരല്ലാത്തവരെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് താൽപര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിൽ ആന്റണി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ അനിൽ ആന്റണിയെ
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഹൃദയംഗമമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें. Friends, at the outset, I convey my greetings to all the members, workers, office bearers who are working in the Bharatiya Janata Party under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and our National President Shri J.P. Nadda ji. This morning we were benefited immensely by the Honorable Prime Minister's guidance on the future of the Bharatiya Janata Party and the agenda before the nation as we all work collectively in the Amrit Kal to make India a developed nation. Prime Minister Narendra Modi today also stressed significantly on the series of measures that have been taken over the last 9 years without any discrimination, bina bhedbhav ke, to make sure that good governance and the benefits of a fast-growing economy reach the last man at the bottom of the pyramid. And I say this to bring the background of Mr. Anil Antony, senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. He's a multifaceted personality. I was very impressed when I saw the credentials of Shri Anil Antony ji. After graduating from the College of Engineering in Trivandrum, he pursued his master's degree from Stanford University. And I think we all know that is the envy of every engineering student to be able to get a chance to study at Stanford. Not only that, he has also completed a program at MIT Sloan on artificial intelligence and brings with him huge intellectual capabilities, which coupled with his significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics, makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India, and someone who believes in India first. The fact that he raised strong objections to the BBC documentary which sought to inflame tempers and raise completely unfounded and baseless allegations against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, which were termed by Mr. Antony as an assault on India's sovereignty and integrity, was obviously not liked by the Congress party, which at the same time was trying to use British soil to attack all democratic institutions in India. Despite his significant contribution in the social media field, in digital communications, as convener also of the digital media of the Kerala Pradesh Congress Committee, Mr. Antony was truly insulted with the behavior meted out to him for standing up for India and for national pride. And therefore he had to leave the Congress. And I compliment him for his boldness, for his strength and courage of conviction, that on a matter of principle, he stood the ground for the nation.
I've also seen his very significant contributions to furthering India's relationship with many other countries around the world. He has had a significant contribution as a young leader. He was designated a Munich Young Leader, also participated in the European Union Visitors Program, where at the European Parliament and European Commission, he was an invitee. He has been part of several youth dialogues, be it in Australia, be it in Germany, be it in Japan, where he was called a future global leader by the government of Japan. I also would like to place on record that his views resonate very well with Prime Minister Modi's vision for sustainability and is also an active warrior against the impact of climate change. He is a net zero climate fellow at the School of Policy and Governance in 2022. With all these several facets to his personality, Mr. Antony is a very grounded political worker and is convinced that the Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji is the one party which cares for India, which cares for 140 crore Indians, which is strongly an advocate of inclusive growth and sustainable growth. And believing in the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I would truly like to place on record our warm welcome to Shri Anil K. Antony ji, who joined the Bharatiya Janata Party on our foundation day in the presence of Shri J.P. Nadda, our Prabhari of Kerala, Shri Prakash Javadekar ji, and the BJP State President, Shri K. Surendran ji. Warm welcome to you, Mr. Antony, and I wish you well in the party. And with the way the party is growing in Kerala, we have full faith and confidence that you will continue to play a very important role in the politics in Kerala, in national politics, and help the party grow in our footprints in South India. Thank you very much. धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी। आज अनिल एंटनी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और अनिल एंटनी जी ने आज इस दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा अनिल एंटनी जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षिताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास दृष्टिकोण है। He also has a very clear vision to place India as a very prominent pole in an emerging multipolar world. In times like this, the central government, Bharat Sarkar, and the BJP organization, led by the Honorable Prime Minister, Amit Shah ji and Nadda ji, are working tirelessly to take
this vision and all these people-friendly policies to every nook and corner of this country. I, as a young Indian, young India represents vast majority of India, the biggest majority of India. I do think that it is my responsibility and duty to contribute towards the Prime Minister's vision of nation building and national integration. I also hope that vast majority of India, whole of young India, whole of India feel the same and join these initiatives. ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ 44-ാം സ്ഥാപന ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ ആദരണീയനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരവസരം നൽകി ഇന്ന് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. Well, I think very clearly the Congress was determined from the very start of the second half of the session not to allow the session to run. They were continuously disrupting and disturbing the proceedings of the House. And on a baseless issue on which the government had no role at all, they were trying to deflect the attention from important issues which were to be deliberated and discussed in the House, particularly since it was the budget session. And the budget has been widely received and welcomed by the entire country. My own reading is that the Congress was running away from the debate on the budget, recognizing that a budget which has been liked by all sections of society. I'm sure all my media friends here must be meeting different people from the middle class, from the poor, from different marginalized sections of society. Almost universally, the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister have put together a budget which was universally welcomed and appreciated. The Congress did not want the budget to be discussed. Therefore, they were raising baseless demands and not allowing the House to run. At the same time, the Parliament, all our institutions, democratic institutions like the Judiciary, Election Commission, all were attacked by senior Congress functionaries, not only in India, but also on foreign shores. And clearly we could not accept that the leader of the principal opposition party, the Congress, could not even have the magnanimity to apologize to the nation for bringing politics on foreign shores. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही इस सदन के दूसरे सत्र के दूसरे भाग में. मैं समझता हूं कांग्रेस ने शुरू से ही मन बना लिया था कि किसी हालत में हम ये सदन चलने नहीं देंगे. बजट जिसका लगभग देश में हर वर्ग ने स्वीकार किया, स्वागत किया और संतुष्टि दिखाई, उसके विरोध में उन्होंने एक बेबुनियाद, बिना किसी तर्क के एक डिमांड रेज करके हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं देने का फैसला कर लिया था. और एक विदेश में जाके जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार किया, जिस बहुत ही खराब तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट का अपमान किया, पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, चेयरमैन और स्पीकर का अपमान किया. और मैं समझता हूं देश में कोई भी व्यक्ति भारत की जो संस्थाएं हैं,
जो हमारे लिए अमूल्य लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उसका अपमान देश में कोई भी सहन नहीं कर सकता है। बड़प्पन इसी में था अगर उनके नेता माफी मांगते देश से। दुर्भाग्य से उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, उल्टे और सीना जोरी करके देश को अपमान को और ज्यादा गढ़ने की कोशिश की। राजीव मनोरमा, प्लीज 1 मिनट। राजीव मनोरमा। Before you joined BJP, you had a discussion with your family, or especially with your father? See, in my house there are 4 people. There is my father, there is my mother, there is my brother and me. All of us are very different people. Family, he is my father, so we have a very good relationship. He is the person I love and respect the most in my life. But this is not about personalities, this is about a difference of opinion, ideas. And I strongly believe that I had taken the right step. But my respect for my father, my love for my father remains the same, it will always remain the same. There is no question of any politics in my family. नीरज पांडे, एबीपी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है एक यूथ एक बूथ, तो क्या आपने बूथ पे आप अपने पिताजी को भी भाजपा में लाने का प्रयास करेंगे? वो भी आ सकते हैं क्या? अब हम प्रश्न बजट सेशन पे ले रहे हैं, तो जतिन जी यदि प्रश्न हो तो आपका जवाब आ गया। नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती थी कि जो लिस्टेड बिजनेस है उसके ऊपर चर्चा हो। बजट सत्र बजट के ऊपर होता है, बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए होता है। और यहाँ कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं थी, यहाँ कोई किसी के स्ट्रिक्चर्स नहीं थे। एक विदेश में कोई बैठा हुआ कुछ लिख दे जिसमें भी कोई सरकार के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं, सरकार की कोई उसमें गलत काम जाहिर नहीं होती है, उसके ऊपर उन्होंने जब तय कर लिया था कि हाउस नहीं चलने देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हाउस नहीं चल सकता था। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, कांग्रेस ने बजट के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। और मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के नेता विदेशी धरती पे जाके भारत के बारे में बुरा भला बोले, भारत के लोगों का अपमान करे, सदन का अपमान करे, हमारी जुडिशरी के बारे में इस प्रकार के आरोप लगाएं। चेयर के बारे में तो इतना बड़ा वक्तव्य शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने इस्तेमाल किया होगा जितना कांग्रेस और कांग्रेस के अलग अलग नेता, बड़े नेता और छोटे नेता दोनों जिस प्रकार से चेयर के बारे में अपमानित भाषण कर रहे थे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने भी इस पे कंप्लेन लिखी है चेयर को कि चेयर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये एक प्रकार से सदन के प्रिविलेज का भी मामला है और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। जी, आप लोगों ने कई बार तिरंगा यात्रा निकाला है अपनी पार्टी में, तो आज कांग्रेस और पूरे ऑपोजिशन ने भी तिरंगा यात्रा की, हालांकि बहुत छोटा यात्रा संसद से विजय, और उन्होंने कहा कि आप लोग सदन में बोलने देते हैं, इसलिए लोगों ने तिरंगा का सहारा लिया है। और आगे तिरंगा की आन बान शान पे कभी कोई आंच नहीं आएगी, उसके बारे में हम तो बहुत दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ जिंदगी भर काम करते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस ने, चाहे थोड़े ही लोग थे, चाहे छोटा ही रास्ता था, लेकिन एक शुरुआत की है तिरंगा का सम्मान करने की। उम्मीद करूंगा आगे भी देश में भी और विदेश में भी जाके वो तिरंगा का सम्मान रखे, बजाय के भारत के और भारत के लोकतंत्र के ऊपर गलत आरोप लगा के भारत के लोगों का अपमान करे, भारत में सदन का अपमान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।